Hello students, the question is energy levels A, B and C of an atom correspond to increasing values of energy, that is EA less than EB and EB is less than EC. Let lambda 1, lambda 2 and lambda 3 be the wavelengths of radiation corresponding to transitions C to B, B to A and C to A respectively. The correct relationship between lambda 1, lambda 2 and lambda 3 is option A, lambda 1 square plus lambda 2 square equals to lambda 3 square. Option B, 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2 is equal to 1 upon lambda 3. Option C, 1 lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 equals to 0. And option D, lambda 1 plus lambda 2 equals to lambda 3. So the problem is based on the basic concept that when there is a transition from a specific energy level, for example E2 to E1, then there is a generation of photon and this photon is having a certain wavelength lambda. So the relationship between these two levels and lambda is given by E2 minus E1 is equal to Hc upon lambda, or we can say that delta E equals to Hc upon lambda. So this is the basic concept used to solve this particular problem. Now in this particular problem, three energy levels are given respectively. For example, EA, EB and EC. These are the three energy levels which are given in this particular problem. When there is a transition from C to B, then there is a generation of photon corresponding to a wavelength of lambda 1 according to the problem. And when there is a transition from B to A, then a photon is generated. Photon comes out having a wavelength of lambda 2. And when there is a transition from C to A, that is from the highest energy level to the lowest energy level, there is an emission of photon having a wavelength of lambda 3. Now there are three transitions given. Now according to these three transitions, we can write the equations as, first of all, for the transition from C to B, we can write the equation as EC minus EB is equal to Hc upon lambda 1. Let us call this as equation number 1. Similarly, for the transition from B to A, we can write the equation as EB minus EA is equal to Hc upon lambda 2. So this is our equation number 2. Now the third transition is corresponding to the transition from C to A, that is EC minus EA. So this is equal to Hc upon lambda 3. So this is my equation number 3. Now if we add these two equations, first and second, we get the result as left hand side to left hand side and right hand side to the right hand side. This minus EB cancels with this plus EB. So we get the left hand side as EC minus EA is equal to Hc upon lambda 1 plus Hc upon lambda 2, which is equal to Hc bracket 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2. Now EC minus EA according to equation number 3 is nothing but this is equal to Hc upon lambda 3. Now this Hc cancels with this Hc and we get the result as 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2 is equal to 1 upon lambda 3. So the final result is 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2 is equal to 1 upon lambda 3. So this is the relationship between these three wavelengths, and according to the given options, option B is correct here. So यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें हमें कहा गया है कि एनर्जी लेवल ए बी सी दिए गए हैं एटम के, जो कि इंक्रीजिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ई ए लोएस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ई बी उससे ज्यादा एनर्जी को, और ई सी हाईएस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ट्रांजिशंस की बात की गई है कि अगर ट्रांजिशन सी टू बी होता है, इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है सी से बी पे, तब जो फोटोन एमिट होता है उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है। अगर ट्रांजिशन बी से ए में होता है तो एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा 2 है, और अगर ट्रांजिशन सी से ए की तरफ होता है तो एमिटेड फोटोन की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 3 है। हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है तीनों वेवलेंथ्स के बीच में, जो हमें गिवन ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंगली उन्हें देखते हुए हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट मैच होगा।
यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी जो हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया स्टार्टिंग में, उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमने EC माइनस EB को बराबर रखा HC अपॉन लैम्डा 1। ये पहला ट्रांजिशन की हमने बात की। अगर ट्रांजिशन B से A में होता है तो हमने इक्वेशन लिखी EB माइनस EA इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा 2। और जो थर्ड ट्रांजिशन है वो है C से A की तरफ, तो उसके लिए हमने इक्वेशन लिखी EC माइनस EA इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा 3। शुरू की दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया, माइनस बी से प्लस, माइनस ई बी से प्लस का ई बी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में ई सी माइनस ई ए, और राइट हैंड साइड में मिलेगा एच सी अपॉन लैम्डा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा 2। यहाँ पे एच सी को हम कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में हमारा रह जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड, ई सी माइनस ई ए बराबर है एच सी अपॉन लैम्डा 3 के, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी इन प्लेस ऑफ ई सी माइनस ई ए। एच सी से एच सी कैंसिल आउट हो गया, रिजल्टिंग इक्वेशन बची 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2 equals to 1 upon lambda 3. So this is the relationship between these three wavelengths. So we can say that option B is correct here. So hope you understand the explanation. Thank you.